हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवयानी एंड आज का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु इज प्लानिंग टू स्टडी इन द यूके फॉर द बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। तो अगर आप एक सिचुएशन में हो कि आप डिसाइड कर रहे हो कि एजेंट के साथ अप्लाई करें, कौन से एजेंट के साथ अप्लाई करें या खुद से करें, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सो आपने देखा होगा कि इंडिया में इतने सारे एजेंट्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर फ्री। और आपको पता है इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता। सो व्हाट इज द कैच? So in this video, I'm going to talk about the truth about how agents earn. Is it a scam? Should you trust them? And is it really worth going to an agent and actually paying them money to do your UK applications? So this video is going to be just that. I'm going to be revealing बहुत सारे truths, बहुत सारे secrets, information, data which I have collected. I'm going to talk about that. So make sure you watch this video until the end. And then make sure you make the right decision कि कौन सी agency के साथ apply करें and which is the best route for you. So let's just get into this video. So before we begin, let me take a minute to talk to you about today's sponsor, which is Amber Student. So Amber Student Southeast Asia का largest student accommodation provider है. So अगर आपने एजेंसी या खुद से भी अप्लाई किया, you usually get your offer letter between 2 weeks to 2 months. And immediately after getting your offer letter, I recommend to book your student accommodation. And student accommodation is the best place to be. मैंने चैनल में भी बहुत ही बात किया about the pros of staying at a student accommodation. But all you have to do is, I've added a link in the description box below. Just go on that. You can either click on personal assistance, या you can just add in the name of the university and see कि उसके नज़दीक कौन से other options you have and select the best option for yourself. Then just register with the details. You can directly book from the website. Like there is like no hassle. They take care of everything, sub documents, like you can trust it 100% because my accommodation was also listed on Amber Student and literally the best experience. So let's just get into this video now. So आपको पता होगा कि इंडिया में इतने सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं. सम ऑफ द पॉपुलर नेम्स आर लीप स्कॉलर, देयर इज IDP, लेवरेज, एडू, एडवा, SIUK. बट नॉट जस्ट दैट, बहुत स्मॉलर एजेंसीज भी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है. जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप इन कि एजुकेशनल कंसल्टेंट्स और स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स नियर मी एंड यू विल गेट लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट कि आपके एरिया में 1 किलोमीटर पे है, 500 मीटर पे, 200 मीटर पे है. लाइक सो मेनी ऑफ देम. But most of them say that they're going to provide the service for free. So why do they do that and what is the catch? So let us take a look at UK based universities. So UK में more than 150 universities हैं. So the list on the left are the top few universities in the world. Cambridge, Oxford, Imperial, UCL, King's, Manchester. So as a student, या किसी को भी ये नाम पता है, मैंने बोला कि आई गो टू किंग्स कॉलेज लंडन, लाइक ओ किंग्स, आई गो टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, ओ UCL, लाइक everybody knows these names. But if you see the list on the right, so this is QS World Rankings of 2023, okay? So if you see the list on the right, Birmingham City University was ranked the worst university by QS World Ranking. There is Leeds Beckett University, there is University of Northampton. So एज अ स्टूडेंट वाई वुड यू गो टू दिस यूनिवर्सिटीज जो लीग टेबल्स में सबसे लोएस्ट रैंकिंग है? एंड हाउ विल दीज यूनिवर्सिटीज इवन गेट स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस? सो द आंसर इज एजेंट्स. सो ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, वो इंटरनेशनली अलग अलग एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं टू गो एंड गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम देम टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी. सो उनके लिए वो क्या करते हैं, व्हेन एन एजेंट गेट्स अ स्टूडेंट एंड एनरोल्स देम टू दिस यूनिवर्सिटी, द एजेंट गेट्स अ कमीशन. विच इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. दिस इज हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स. बिकॉज थोड़े लोगों के ऐसे होता है कि मार्क्स कम है, थोड़े लोगों को पैसों का इशूज होता है. तो नॉट दैट दीज यूनिवर्सिटीज आर बैड यूनिवर्सिटीज, जस्ट दैट दे वुड नीड अ बिट मोर पुशिंग सो दैट स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक इन जनरल आर मोर अवेयर. सो आपको पता होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी एजेंट के पास गया, बोलते हो कि ओ आई वांट टू स्टडी इन द यूके. दे वर लाइक ओके, मैं आपको एक लंबा लिस्ट भेजता हूँ ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज विच आर गुड इन द यूके एंड विच यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू. तो मैंने बोला हाँ, मेरे को मार्केटिंग पढ़ना है, तो ठीक है, मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज. So mostly the universities जो उस लिस्ट में होते हैं are the ones which are not very highly ranked but also have the highest commission rates. तो आप बोले, सो आप जाते हो, उनको बोलते हो कि आई वांट टू गेट इनटू माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, आई वांट टू गेट इनटू किंग्स कॉलेज लंडन. वो बोलते हैं अच्छा, दिस इज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, यू शुड अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी, बट यू शुड ऑल्सो अप्लाई टू सम सेफ यूनिवर्सिटीज, बैकअप यूनिवर्सिटीज. सो वाई डू दे से दैट? इज इन केस किंग्स में नहीं हुआ तो यू गो टू सम अदर यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे उनको कमीशन मिल सकता है. तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स इन अ रियल लाइफ सिनेरियो. सो देयर इज अ न्यू एजुकेशनल कंसल्टेंसी कॉल्ड देवयानी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स. तो मैं एज अ ब्रांड, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास जाती हूँ कि हाँ, मुझे आपके साथ कोलैबोरेट करना है. आई विल ब्रिंग इन स्टूडेंट्स, आई गो टू मे बी 10 यूनिवर्सिटीज. वो बोलते हैं ओके, सो आई हैव टू गिव देम अ टारगेट कि मैं कुछ भी करके 100 स्टूडेंट्स लाऊंगी. वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, सो इज अ गुड नंबर, आई अग्री, वी डोंट माइंड, यू कैन कम इन. ठीक है, तो फिर एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंसी मैं एजेंट्स को अप्लाई कर
सो एज एन कंसल्टेंसी में एजेंट को अपॉइंट करती हूँ. सो एजेंट्स कौन होते हैं जो आपको अब जब एजेंट्स कौन होते हैं जो लोग आप कभी एजुकेशन कंसल्टेंसी जाते हो, वो जहाँ पे बैठे होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो वो आपको कन्विंस करते हैं कि दिस इज अ गुड यूनिवर्सिटी एंड यू शुड अप्लाई टू दीज यूनिवर्सिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो एवरी टाइम एन एजेंट सक्सेसफुली कंप्लीट्स एन एप्लीकेशन, मतलब आपका एडमिशन हो गया तो उनको पैसे मिलते हैं एंड 50% दे गिव टू द कंपनी, 50% दे कीप फॉर देमसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स लिटरली. सो मैं अगर एजेंट हूँ तो मैं नीचे अपने आई अपॉइंट 2 अदर एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी वही काम कर रहे हैं. तो अगर ऐसे हुआ कि फॉर referring and for appointing this person, the agent B gives agent 1 like 5,000 रुपए for example. So the agent 1 is earning अपने से but also through commissions from other agents. So literally you can imagine the amount of earning is huge and massive, and this is how the industry works. So I have got this information from Pi News and some other websites. So मैं सब relevant links description box में डाल दिया है, तो if you want to read more about it you can go ahead. But usually the standard commission rate for international students is 10% of the admission fees. मतलब अगर आप 20 लाख रुपए भर रहे हो यूनिवर्सिटी को तो एजेंट को 2 लाख रुपए मिलेंगे. कैन यू इमेजिन, 2 लाख पर स्टूडेंट. एंड उसमें से 1 लाख वो रखते हैं, 1 लाख उन्होंने अगर एजुकेशनल कंसल्टेंसी लाइक देवयानी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स को दे दिया तो भी 1 लाख का प्रॉफिट है फॉर ईच स्टूडेंट, विच इज क्वाइट अ लॉट. यू कैन इमेजिन दैट इट इज क्वाइट अ लॉट. सो there are some universities who also pay up to 20%, like 4 लाख रुपए तक पे करते हैं. So some of the university, like for example University of Exeter pays 3,50,000 rupees per student recruitment. Can you imagine? University of Kingston 3 lakhs almost. Durham pays 2,80,000. So 2021-22 का मतलब this article was published in 2022. So this is very recent data. So University of Exeter paid 9 million pounds. Can you imagine 9 million pounds to recruit 1,800 postgraduate students and 750 undergrad students internationally? 9 million pounds, that is a lot of money. So that you need to keep that in perspective. But there are some other universities are very khullam khulla, like for example University of Warwick. अगर उनके वेबसाइट पे गए, यू गो टू इंडिया कंसल्टेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स आर IDP एंड SIO के. लाइक देयर इज ओनली वन दिल्ली वाला विच हैज लाइक यूनिवर्सिटी ऑप्शंस वाला दूसरा, बट like 99% of their collaborations are with IDP and SIUK. So if you want to get into University of Warwick, आपका best option is to apply through IDP or SIUK because उनका collaboration है. Some other university, some other agency, for example Leap Scholar का उनका नहीं है collaboration, so they won't promote this university as much. So you need to do that kind of research as well. So आपके अलग अलग websites पे, अलग अलग universities पे you will see, like not always but most of the times you will see कि उनके किसके साथ collaborations है, and that is the best way to apply to these universities. सो इन दिस डेटा उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लाइक 129 यूनिवर्सिटीज़ के पास गए, उन्होंने बोला कि ओके आप कमीशन में कितना पैसा देते हो हमको बताओ, सो दैट वी कैन कंडक्ट अ रिसर्च ऑन इट. एंड 19 यूनिवर्सिटीज़ रिफ्यूज टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन कि हम नहीं बताएंगे हम कितना पे करते हैं कंसल्टेंट्स को. सो इट कुड बी इवन मोर देन एक्सटर्न, लाइक वी डोंट नो दैट इन्फॉर्मेशन. सो सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ऑफ एजेंट में रिक्रूटमेंट इज लिवरपूल, एसेक्स, न्यूकासल, कार्डिफ एंड बर्मिंघम. सो ये यूनिवर्सिटीज़ आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिन्होंने नहीं इन्फॉर्मेशन रिवील किया, लीक किया है ऑफ हाउ मच दे पे. सो इफ यू सी द चार्ट बिलो एज वेल, वो पहले कैसे होता था आफ्टर रिसेंटली लाइक 2022 में कितना इंक्रीज हुआ. सो पहले फॉर एग्जाम्पल किंगस्टन यूनिवर्सिटी को 400 स्टूडेंट्स अराउंड रिक्रूटमेंट से होते थे, अभी ऑलमोस्ट 2,000 स्टूडेंट्स किंगस्टन इज गेटिंग थ्रू एजेंसी रिक्रूटमेंट. सो देर आर 6 यूनिवर्सिटीज इन द UK हु से कि वो एजेंट्स को बिल्कुल पे नहीं करते, विच इज ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल एंड UHI, like the West Highland and Open University. I don't know University of Wales and Highland, but of course the first 3 I know. So apparently King's College London also pays recruitment agents. So Imperial College London, which is one of the top universities, उन्होंने बोला कि on the policy on international agents कि they will not pay any commission to any agent to recruit their students. So the best way to apply to Imperial is on your own. That's what you can realize from this. तो अगर कोई एजेंसी बोल रहा है कि हाँ मैं आपको Imperial में अप्लाई करने के लिए हेल्प करता हूँ, pay me 5,000, 10,000 rupees or whatever it is, don't go to them because ऐसा नहीं है कि this agent will guarantee your admission because it clearly states कि no agent is going to get any priority, कि कोई एजेंसी को प्रेफरेंस नहीं देने वाला है. The student who is good, only they will be recruited in this position for this role. So for example in King's College London, so I applied through IDP education and तब I had applied to 4 universities.
So I applied to King's, had a Durham, Bristol and all these universities. आपको मेरे बाकी वीडियो से पता होगा. So apparently Durham, Bristol did have collaborations with IDP because मेरे को application fees नहीं भरने पड़े. So the application fee was waived because I applied through IDP. But for King's College London, because they did not have a collaboration, I had to pay £120. नहीं, I think तब £100 था. I had to pay £100 to the university to make my application. So even though IDP did help me, कि IDP ने फॉर्म भरा मेरा किंग्स का, पर एप्लीकेशन फ़ी का वेवर नहीं मिला. सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रो ऑफ अप्लाइंग थ्रू एन एजेंसी, यू नो, कि आपको एप्लीकेशन वेवर्स मिल सकते हैं, आपको काफ़ी स्कॉलरशिप के ऑप्शन्स मिल सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. बट बिग यूनिवर्सिटीज़ लाइक किंग्स और इम्पीरियल और UCL, मोस्ट लाइकली यू विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ £100, £120, £150 तक, just to send an application. उसके बाद which is non-refundable, as you can see here. अभी उसका कल last it was £100, now it's £120 and it is non-refundable. So you need to really think it through before you apply. So now before you go to any agency, you need to make sure कि पहले आप खुद का थोड़ा रिसर्च करें कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी पसंद आ रहा है, what are the rankings of this university, how is the curriculum, how are the like everything. You need to understand what you want and which university is the best for you. So before you go there, you need to make your mind clear कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटीज अच्छे लग रहे हैं, ये कोर्सेज अच्छे हैं. सो आपका माइंड में अगर होगा कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी और उन्होंने बोला क्वीन मैरी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, देन बिंगो. पर अगर आपको किंग्स को जाना है, उन्होंने बोला किंग्स नहीं, तो आप पूछो कि वाई नॉट किंग्स, आई वुड लाइक टू अप्लाई टू किंग्स एंड समथिंग लाइक दैट. सो डोंट फॉलो देयर एडवाइस ब्लाइंडली बिकॉज वो बहुत यू नो दे आर सेल्स पीपल, दे वो मैनिपुलेट करेंगे. हाँ कि वो आप लोन ले रहे हो, आप स्कॉलरशिप चाहिए क्या, ओ दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी. पर आप स्मार्ट हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट इज द राइट रूट फॉर यू. The next thing you should do is before you apply, talk to the alumni, go on LinkedIn, उनको ढूंढो, उनसे बात करो कैसा था कोर्स था, फीडबैक लो. अगर लोग बोल रहे कि मैंने चैनल पे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ डाल दिए, इफ़ यू हैव चेक्ड और नॉट चेक्ड, पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने रिकॉर्ड किए, तो लिसन टू दैट, सी इफ़ यू लाइक इट. थोड़े यूनिवर्सिटीज़ बोले एकदम प्रैक्टिकल है, थोड़े बोले बहुत थियोरेटिकल है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एज अ स्टूडेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. सो द ओवरऑल थिंग इज, आई डोंट थिंक आपको किसी एजेंट को पे करना चाहिए. आई थिंक अप्लाइंग थ्रू एन एजेंट इज़ अ गुड आइडिया, पर आपको किसी को पे नहीं करना चाहिए. इफ समबडी इज चार्जिंग यू, इट इज़ बेटर दैट यू अप्लाई ऑन योर ओन. गो टू सम एजेंसी, फिल द फॉर्म्स विद देम बिकॉज आपको एप्लीकेशन वेवर्स मिलते हैं, यू नो मोर अबाउट स्कॉलरशिप, आपकी एंग्जाइटी कम होते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज लाइक दैट. बट ऑल्सो यू नीड टू बी रियलिस्टिक ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू नो योर करियर गोल्स आर. डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. So there's another video I have made of how I got into King's College London. उसमें मैंने बात किया है about agency versus applying on your own. So when I applied through IDP, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, like I've talked about that. So make sure you watch this video and that's it. So this is how agencies earn. They earn through commissions. They earn through you. So you need to make sure that you follow the proper steps. Make sure that you don't get scammed and make the right decision for yourself. And all that is left to do is subscribe to my YouTube channel and watch all of my other videos. Thank you for watching. Bye.